Morning students, today we are going to do Tiger in the Zoo. See, in this the poem is written by Leslie Norris और वो इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है? He is explaining the helplessness कि एक टाइगर जब जू में होता है तो how he is helpless and his sadness, his agony. एक उसने बताया है कि कोई भी एनिमल हो अगर वो फ्री है, so what is that condition? And what is the condition of the people, these human beings who are caging them for their own fun? So that is what he wants to tell us, that these wild animals should be allowed to live free in the jungle and we should not cage them. तो उनकी कंडीशन के बारे में पोएट ने इस पोएम में बताया है. First, the poet has shown the tiger in a cage. He has given his description कि उसके beautiful stripes of skin है, velvet soft paws है, but the tiger is not happy. वो खुश नहीं है क्योंकि वो केज में है. He is angry कि why has he been caught and put in the cage? उसको केज में क्यों डाल दिया गया है? The poet says that if the tiger was not confined to the zoo cage, अगर वो टाइगर कन्फाइन नहीं होता जू केज में, तो वो कह रहा है कि वो कहीं अपने हैबिटेट में, कहीं लॉन्ग ग्रास के पीछे किसी वाटर बॉडी के पास अपने प्रे का इंतज़ार कर रहा होता. वाटर बॉडी क्या है कि बेटा वहाँ कहीं भी पानी का होता है, वहाँ रात को एनिमल्स पानी पीने आते हैं. सो here the tiger will be ready to catch especially the deer. Also, he would have made all the people staying nearby their jungle or in the villages जो forest area में आते हैं, he would have terrorized them, उनको डरा दिया होता. पर अब वो बिल्कुल opposite चीज़ है क्योंकि why he is in the cage, वो एक strong building material के अंदर है. He is helpless. इवन जो विजिटर्स आते हैं उनको भी वो नहीं डरा पा रहा है. यहाँ वो पावरलेस हो गया है. ही इज़ ऑल अलोन और अकेले अकेले सिर्फ ही इज़ लिसनिंग टू द पेट्रोलिंग व्हीकल्स ऑफ द पुलिस और ही इज़ लुकिंग एट द स्टार्स थ्रू हिज केज. यहाँ टाइगर की पर्सनालिटी व्हेन इट्स इन द केज इट कम्प्लीटली चेंजेस, बिल्कुल ही चेंज हो जाती है. पर जब वो फ्री होता है तो उसको अपना पूरा प्लेजर मिलता है. ही कैन डू एवरीथिंग. सो द मैसेज दैट दिस पोएट वांट्स टू गिव थ्रू दिस पोएम इज कि वी शुड नॉट कन्फाइन एनी एनिमल्स एंड वी शुड नॉट डिप्राइव देम फ्रॉम देयर प्लेजर. लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. ही stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pods of velvet kite in his quiet rage. Here the poet is telling us that the tiger is in the cage. It is confined and poor thing, it is just moving around in the cage. वहाँ इधर उधर घूम रहा है. The cage is very small for it. It cannot even move nicely there. Its soft feet cannot hear, means no one can hear his footsteps because his soft feet do not make any such sound. He is very angry when he is walking in the cage thinking, why has human being confined me in this cage? He said if he would be in the jungle, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. बोले अगर वो आज़ाद होता, he would be free, so he would be hiding somewhere near the water bodies behind the long grass and waiting for some deer to come whom it would catch in order to have its food. Means he wants to say कि actual life of जो tiger है वो जंगल में है, where it can catch its prey and it can eat, not in this cage. He should be snarling around houses at the
jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Poet ये कह रहा है कि if the tiger would have been free, he would have roared, snarled, और जितने भी houses है outskirts of the forest, around the forest, वो उन people को he would have terrorized them with his sharp tooth and claws, and it would have created fear in the people. जो people है वो इससे डरते उस टाइगर से. पर आज उसकी ये कंडीशन है कि जो विजिटर्स उसे देखने आ रहे हैं they also are not scared of it. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. यही है बेचारे की अभी रियलिटी ऑफ द टाइगर कि इट इज़ इन द केज, जहाँ वो पावरलेस हो गया है, जहाँ उसकी सब स्ट्रेंथ चली गई है. या तो ही डजंट इवन हैव दैट मच कि ही कैन टेरराइज द विजिटर्स, क्योंकि ही इज इन द केज. सो ही जस्ट सिट्स, ही डज नॉट अटैक्स एनीवन and is crying over his condition. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Poet कहता है कि in the night, when the tiger is in the cage, उसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, द पुलिस कार्स एंड व्हीकल्स जिसकी आवाज़ आ रही है, विच आर ऑन गार्ड एट नाइट, ही कैन हियर दोज नॉइजेस, और ही कैन हियर द साउंड्स ऑफ सम कार्स पासिंग बाय, और ही जस्ट सिट्स इन हिज केज एंड स्टेयर्स एट द शाइनिंग स्टार्स with his eyes. But all this shows कि पोएट बताना चाहता है कि the tiger is very sad inside the cage. पर केज के अंदर होते वो कुछ भी नहीं कर सकता, ही कैन नॉट डू एनीथिंग. इसलिए उसके पास सिर्फ और कुछ नहीं है, बस स्टेयर एट द नाइट एंड वेट, एंड हिज थॉट्स आर वे थिंकिंग दैट कब मैं फ्री होऊंगा. नाउ लेट्स गो टू द लिटरेरी डिवाइसेस. इन स्टैंजा 1, द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इज राइम स्कीम. यह राइम स्कीम इज ABCB. जो पर्सोनिफिकेशन है वो टाइगर जो पर्सोनिफाइड है, हियर इट इज सेड एज ही. टाइगर को एक पर्सन की तरह बताया है, इसलिए इट इज यूज्ड ही. और जो मेटाफर है, टाइगर्स पॉज आर कंपेयर्ड विथ वेलवेट. मतलब कि जो मेटाफर है कि टाइगर के पॉ को कंपेयर किया है वेलवेट से. एम्बेंचमेंट. एम्बेंचमेंट होता है कि सेंटेंस इज कंटिन्यूइंग टू द नेक्स्ट लाइन, दूसरी लाइन में चला जाता है बिना एनी पंक्चुएशन मार्क. इमेजरी. पोएट ट्राइज टू क्रिएट एन इमेज अबाउट द टाइगर. ही स्टक्स इन हिज वेवी स्ट्राइप्स द फ्यू स्टॉप्स ऑफ हिज केज. ये एम्बेंचमेंट में है और इमेजरी भी यूज हुआ है. कॉन्सोनेंसेस व्हेन वी यूज एनी कॉन्सोनेंट साउंड, एंड एसोनेंस इज व्हेन वी यूज एनी vowel sound. So stalks his stripes, there we are using the S, and vowel side I is used in his vivid stripes. Oxymoron. It is the use of adjectives opposite in the meaning. मतलब आपको सबको मालूम है कि कोई भी चीज़ होती है जब उस एडजेक्टिव को ऑपोजिट यूज़ करते हैं. मतलब यहाँ क्वाइट रेज, एंड यू ऑल नो कि जो टाइगर का साउंड होता है वो कितना लाउड होता है जिससे सब डर जाते हैं. पर यहाँ उसने ऑक्सीमोरन यूज़ करके बताया क्वाइट रेज, मतलब उसकी आवाज़ बहुत कम है. स्टैंजा 2 में लिटरेरी डिवाइस. राइम स्कीम इज सेम ABCB. ग्रास पास. एम्बैजमेंट यूज़ हुआ है वेर आई टोल्ड यू. स्लाइडिंग थ्रू डियर पास मीन्स विदाउट एनी पंक्चुएशंस जब कोई लाइन यूज होती है, दैट इज कॉल्ड एम्बैजमेंट. एलिट्रेशन. यूज ऑफ साउंड P एट द स्टार्ट ऑफ 2 वर्ड्स. प्लम. पास. इमेजरी ही इज यूजिंग कि वो किस तरह है ना टाइगर को की एक्टिविटीज़ को क्रिएट करने के लिए पोएट हैज़ यूज लाइक लर्किंग इन द शैडो.
In stanza 3, again the rhyme scheme is same, A, B, C, B. Embadgement is again used in the line, he should be snarling around houses at the jungle edges. Then anemotopia. Anemotopia is which denotes any sounds. कोई भी साउंड करते हैं ना एनिमल्स, उसको जैसे स्नार्लिंग यहाँ है. Assonance, again use of vowel sound O and I is in this. And consonants, use of consonant sound S. Then in stanza 4, used is rhyme scheme A, B, C, B. Personification, here again the tiger is personified as he. उसको भी एक जैसे person की तरह ही बताया है. Assonance is use of vowel sound E is used this time here. Locked, concrete, cell. Consonants, use of consonant sound S. His, strength, bars. Alliteration, use of B, behind bars. So that's all. So the message given through this poem is that we should not confine anyone in a cage. The animals should remain free. जब human beings को अगर अपन को कोई गुलाम बना देता है, slave, and how do we feel? So same are the feelings and emotions of the animals too. So we should never also confine them, never catch them. Instead, let them be free in their own habitat.